Hello everyone, hello. There was a slight technical glitch. I went on class 7th live चला गया मैं गलती से. But ठीक है, it's all right. I am here now. Sorry for being late. We are only 4 minutes late, and let's start with a lot of energy, and we'll try to cover up the time which is lost. Let me see if I am able to see the live video and live comments. Yes, I can see you all. Let me see if I am able to see the live video. Great. So, hello everyone, hello, how are you? Good afternoon everyone. Today we are going to study about friction. कल हमने पढ़ा था force और pressure के बारे में. I hope you liked the video. Today we are going to continue the same series right after force and pressure. The next chapter is friction, and even yesterday we discussed friction a little bit, remember? Yeah. So, okay, there might be some discrepancy in the description, but does not matter right now. अभी मैं यहाँ पे हूँ तो आप लोग मेरे ऊपर फोकस करिए, डिस्क्रिप्शन पे तवज्जो मत दीजिए. और आप लोगों को याद है मेरा नाम क्या है? Do you remember who am I? Yesterday I introduced myself. Yesterday I took the first class, and I hope you all remember me because you liked my class a lot. आप लोग comments में you people showed a lot of love. So I'll introduce myself. My name is Muhammad Al Khalid. I am a graduate from IIT Guwahati. I did my bachelor's in design from there, and I will be teaching physics to you people. छोटा सा description है, short and sweet. Okay. Now another thing which I always mention is I'll be doing a lot of experiments because I believe physics is all about experimenting and learning, and turns out you people love experiments as well. क्योंकि मैंने जब भी experiment करवाया है किसी भी class को, everyone loved it so much. Everyone was like, sir और experiment कराओ ये. So I am trying to do as much experiments as I can, and I will be showing everything to you. Okay. Okay, so let us start. And if you have already not subscribed to Unacademy, subscribe to the channel right now. Unacademy is the largest e-learning platform in India, and you will be getting the best classes here. And not just that, call your friends, ask them to join this class as well, because today I am going to take Menti quiz. Yesterday I promised that I am going to take a Menti quiz for you people, and I am delivering the promise. I have prepared a Menti quiz, so pay attention closely to what I am teaching, and I will ask those questions again in the Menti quiz at the end of this session. So let's start. So today we are going to first see what is friction, like force क्या है friction का. Then we will have a look at the factors which affect friction, कि किस चीजों से friction पे affect होता है. Then there is this thing called friction, a necessary evil, which means friction अगर बुरा है, but why is it necessary as well? उसके बाद में we are going to study about wheels, and we are also going to have a look at ways to increase and decrease friction. अभी आप पूछेंगे friction अगर evil है तो उसको कम ज्यादा क्यों करेंगे, कम करेंगे ज्यादा क्यों करेंगे? So we will cover those things, and in the end we will cover fluids में friction कैसे होता है. Cool. So should I start? First of all, let us see what is friction. Friction होता क्या है? Yesterday I gave you a definition of friction. I explained it very briefly. What exactly is friction? So do you people remember what did I tell you? Just type in the comments. I will read. Let's see who remembers what friction is. Sahil Dalal, yes. Today there is going to be a Menti quiz. I had promised yesterday that there will be a Menti quiz, and yes, I will be taking Menti quiz today. Sunshine Enterprise, हाँ मुझे पता है there might be some problem in the description, but we can change it later. अभी आप class में तवज्जो दें. Pay attention to the class and not the description, because we are going to do an experiment immediately after you tell me what do you think friction is. So basically, friction is the force which slows down objects. कोई भी अगर बॉल मूव हो रहा है, जैसा मैंने टाइटल में बॉल का फोटो डाला था क्रिकेट पिच में, मैंने बोला कि है ना, when you start rolling a ball, कुछ देर बाद बॉल रोल होते 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 ऐसा जाते जाएगा, उसके बाद में खुद ब खुद वो स्टॉप हो जाएगा. भला ऐसे क्यों होता है? Because there is a force acting on it which is called frictional force. Apart from slowing down objects, friction also provides us grip. वो कैसे? We are going to look at examples and see how does that happen. But
अभी देखते हैं कि what are the factors which affect friction. So I am going to start my secondary camera right now and I will show you the factors which affect friction. So here we go. You can see that I have a very heavy piece of metal. This is a lock. काफी भारी है ये. And I have attached a rubber band to that. ठीक है? ये एक लॉक है और इसको मैंने एक रबर बैंड लगाया हुआ है. Now just notice what happens when I pull this. See, the lock is over here. Now I'm going to pull this. Do you see that there is some tension in the rubber band when I pull it? It is not like a normal rubber band, right? It's थोड़ा खींच रहा हूं तो there is some tension. Let me show it to you again. When I pull it, there is a little bit of tension in the rubber band. Now, what I am going to do is, I have a mouse pad here. It is a rough surface. You can see that it has a lot of threads made on that. So I'm just going to keep this here, and again I'm going to pull this rubber band. Yep. So now this time you will notice that ये जो यहाँ पे tension आ रहा है ना, this is the rubber band जो stretch हो रहा है, this is more than what it was last time. See, it is a lot more. अभी for example ये इतना लंबा है. Earlier it was smaller than that. Wait, I'll just show it to you again. Without this, when I pull it, the tension is there, but the length of the rubber band is very small. But when I put a rough surface, a rough rubber surface, the rubber band, we have to pull it a lot more. The length is increasing. Now what does this tell us? ये हमको इससे पता चल रहा है कि जो सरफेस पे यहाँ पे काम चल रहा है, that surface is doing something, because लॉक का वेट चेंज नहीं हुआ. This is the same lock, रबर बैंड भी सेम है. See, this is the same lock and the same rubber band. इसको हमने चेंज नहीं किया कुछ भी. But when we pull it, it is different on this surface and it is different on the smooth wooden surface. Rough surface or smooth surface पे there is a difference. Now, why is that so? That is because the nature of the surface in contact affects friction. We know that friction is a contact force. Yesterday we studied about contact forces and non-contact forces. Contact force में हमने example पढ़ा था friction का. फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट से होती है और हमने देखा कि यहाँ पे जो लॉक है, लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विद ईदर द वुडन स्मूथ सरफेस और द माउस पैड विच इज अ रफ सरफेस, द रबरी सरफेस. सो फॉर गिवन पेयर ऑफ सर्फेसेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सर्फेसेस. यानी स्मूथनेस या रफनेस होगा तो फ्रिक्शन उससे अफेक्ट होगा. सो द स्मूथर सर्फेस इज, द लेसर द फ्रिक्शन विल बी. ओके, अगर सरफेस स्मूथ है, इफ इट इज लाइक स्मूथ ज्यादा है, इफ द स्मूथनेस इज मोर, फ्रिक्शन वुड बी लेस. इफ द स्मूथनेस इज लेस, विच मीन्स द रफनेस वुड बी मोर, देन द फ्रिक्शन वुड बी मोर. अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, सरफेस अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा. ये समझ आया ना? तनिष्का इज आस्किंग, सर मेंटी है क्या? हाँ, ये चैप्टर में मैं मेंटी ले रहा हूं. राइट आफ्टर द लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक द मेंटी क्विज. इसी में लाइव मैं लूंगा. तो ये समझ में आ गया ना कि द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट अफेक्ट्स द फ्रिक्शन. अगर सर्फेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा. इफ द सर्फेस इज रफ, देन फ्रिक्शन वुड बी मोर. कूल. तो अभी हम देखते हैं कि how is friction actually caused? यानी फ्रिक्शन हो कैसे रहा है? तो फ्रिक्शन is actually caused by the interlocking of irregularities in two surfaces. For example, have a look at this. अभी ये जो है, you can see that this surface is not smooth, it's irregular, right? So if I draw it, it would be something like this. It's not really smooth. ठीक है? And if I have another object on top of that,
that is not also smooth, then that object would be something like this, right? ये हो गया ऑब्जेक्ट 1, ये हो गया ऑब्जेक्ट 2. तो अभी जब दो रफ सरफेस है ना, लाइक लुक एट इट लाइक दिस, ये दोनों रफ सरफेस है, ये बहुत जब हम जूम करके देखेंगे ना तो सरफेस पास से ऐसा लगेगा माइक्रोस्कोप में. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे मूव, राइट, तो ये दे स्टार्ट इंटरलॉकिंग. ये जो इरेगुलरिटीज है, वी सी ऑल दीज इरेगुलरिटीज, राइट, ये इरेगुलरिटीज दो सरफेसेस का, दे विल स्टार्ट यू नो इंटरलॉकिंग, ऐसे एक दूसरे में अटक जाएंगे ये लोग, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आता है. तो बेसिकली फ्रिक्शन इज नॉट लाइक अ फोर्स कि हम पुश कर रहे हैं. फ्रिक्शन इज काइंड ऑफ अ रेसिस्टेंस बिकॉज ऑफ द सर्फेस, कि ये दो रफ है, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. दैट इज वाई व्हेन देयर इज अ स्मूथ सर्फेस देयर इज लेस फ्रिक्शन, बट व्हेन देयर इज अ रफ सर्फेस व्हिच मींस द इरेगुलरिटीज आर मोर ऑन द सर्फेस, द फ्रिक्शन इज ऑल्सो मोर. क्योंकि अच्छे से अगर देखो इरेगुलरिटीज कम है, इफ इट इज लाइक दिस तो ऐसा स्लाइड हो जाएगा, बट इरेगुलरिटीज अगर ज्यादा है ऐसे, तो देन वो अटकना स्टार्ट हो जाएगा ऐसा अंदर अंदर अंदर, एंड देन इट विल गो स्लोली बिकॉज फ्रिक्शन बढ़ गया है. इतना समझ आया ना? इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? एग्जैक्टली. हाँ, मेंटी होगा. एवरीवन इज आस्किंग मेंटी होगा क्या? यस, मेंटी इज गोइंग टू बी देयर. ओके, तो ये आप लोगों को समझ आ गया. अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन. व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रिक्शन? मैंने पहले बोला था कि फ्रिक्शन इज द थिंग विच स्लोज डाउन ऑब्जेक्ट्स, यानी वो स्लो डाउन करता है, ये बताया था. मैंने बोला फ्रिक्शन ग्रिप भी देता है, बट व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन? हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स जब मूव हो रहे हैं कांटेक्ट में होते हुए, तो फ्रिक्शन उन दोनों को रोक रहा है, उनको स्लो डाउन कर रहा है, उनको जाने नहीं दे रहा, बिकॉज वो ऐसा अटका रहा है आपस में. तो बेसिकली फ्रिक्शन इज द फोर्स which opposes the relative motion. Relative motion means एक दूसरे का जब मोशन होता है, that is relative motion. जैसा अभी इन दोनों का मोशन हो रहा है, this surface and the, तो relative motion means इन दोनों के आपस का जो मोशन हो रहा है, इनको अपोज करता है, यानी इनको मोशन होने से रोकता है. It tries to stop them from moving. That force is known as friction, and this is a contact force. So what is it? What is friction? Friction is the force which opposes relative motion between objects which are in contact. Understood? अभी friction का definition समझ आया ना? You can take a screenshot of this and keep it because ये important definition है. Rhythm Goel Menti will be after the class. ये class के साथ में in the same video Menti would be there. So अभी हम देखते हैं कि जब हम pull कर रहे थे तो बेसिकली ऐसा हुआ कि दिस, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉक्स. ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स है और हमने इसको यहां से पुश किया. ओके, यहां से ऐसा फोर्स लगा के हम पुश कर रहे हैं. इट्स गोइंग लाइक पुश 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 पुश. तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? बेसिकली इफ आई एम पुशिंग एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू स्लो इट डाउन, which means friction is coming from the opposite direction. Yesterday, कल की क्लास में मैंने जो ली थी फोर्स की, उसमें मैंने बोला था कि forces can be added and subtracted depending on the direction. यानी opposite direction में अगर एक फोर्स आ रहा है, इस डायरेक्शन से एक फोर्स आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो they will subtract. That is exactly what is happening here. यानी हम एक साइड से ढकेल रहे हैं और दूसरी साइड से जो फोर्स हमको अपोज कर रहा है, यानी हमको ऑपोजिट डायरेक्शन से रोक रहा है, that is friction. So the friction always acts in the opposite direction of the force which we apply. हम अगर ईस्ट से ढकल रहे हैं तो फ्रिक्शन वेस्ट की तरफ से अप्लाई होगा. If we are pushing a box from right side, then the friction would be from the left side. Understood? यहां से हम फ्रिक्शन दे रहे हैं तो अगर यहां से हम फोर्स दे रहे हैं तो फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड से होगा. अंडरस्टूड? क्लियर, राइट? ठीक है. Now we are going to do another experiment. ठीक है? Just to make you understand this bit more easily, कि जब surface आ रहा है तो how is it happening?
कॉन्टैक्ट फोर्स है तो मैंने आपको बता दिया. Let me open the camera again. Yeah. So see, this time I have the log over kept over here. And apart from that, I have a cell. ये सेल से मैंने आज है ना 7th क्लास वालों का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ाया है. I'm going to use the same thing. What I'm going to do is I'll keep the log here. You can see that the log is a little bit on an inclination. So if I put it here, it will start rolling. What did you see? Once it rolled down, it stopped moving. Did you see? Why is that happening? That is happening because this surface is not regular. What will happen if I remove the surface? Do you think it will stop or do you think it will roll off the table? जल्दी मुझे बताओ comments में. ये अगर मैं ये जो surface है ये हटा दूंगा, I'll just keep it here, and if I leave this, अगर if I start pushing it, will it fall down from the table or will it stop? Let me know. Shruti is saying roll hoga, Shweta is saying it will keep on moving. Yes, that is what is going to happen. Shweta तुम्हारे को crystal clear है यार सारे topics. I like that. So see, I'm just giving it a head start. Oh, यहाँ पे ये दीवार को लग के रुक गया. But let's see if it does not hit anything. See, it rolled off the table. Have a look again. It rolled off the table. Again, if I keep this surface over here, ये अगर मैं वापस यहाँ रखता हूं, stop rolling. क्यों? यहाँ पे irregularity ज्यादा है and it is stopping the motion. Understood? ये clear हो गया अभी? Nice. अगर आपको कोई भी concept clear हो रहा है तो just type crystal clear. I want the concepts to be crystal clear. Crystal देखा है ना आपने? क्रिस्टल की तरह क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में अगर एक टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देन यू आर सेट फॉर द लाइफ. कभी आपको डाउट नहीं आएगा उसके बाद में बिकॉज इट्स ऑल नेचुरल थिंग्स अराउंड अस. सिमिलरली हम जब रोड पे जाते हैं व्हाट हैपेंस, अगर रोड वेट है देन द फ्रिक्शन विल बी मोर, हम स्लिप होकर गिर जाते हैं. इफ द रोड इज ड्राई वी कैन वॉक ऑन इट. तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट फ्रिक्शन. ठीक है. So the other factors which क्या हो गया? Yeah. So what are the other factors which affect friction? अभी आप मुझे ये बताओ कि how exactly is friction working? Friction, like ये जो irregularities है, that is happening because of the weight of the box, right? अगर मैंने लॉक रखा था तो लॉक का खुद का weight था, which is gravity pulling it down. So that is what is causing the friction. So if I have two books with me, I have Harry Potter का books है मेरे पास. This is Harry Potter and the Philosopher's Stone. You can see this Philosopher's Stone. I am going to keep it here. And I have another book. ये थोड़ा see, this is a thick book. ठीक है. Can you guess which book is this? ये भी हैरी पॉटर का है, सबसे मोटा वाला बुक. I am keeping it on top of this. You can see that this is Harry Potter and the Order of Phoenix. Which book do you think will have more friction when I pull it? Let us see. So I am going to give it a flick, okay? This moved this much. I'm going to give it a flick again. मैं बस ऐसा ऐसा चुटकी से मारूंगा इसको. This moved इतना. अभी जब मैं ये मोटा वाला बुक रखता हूं, I'm going to give it a same flick. Ouch! I'm doing this for you guys. Okay, it's hurting my fingers. I'm giving it a flick again. Ow! Should stop this. But you have seen कि जब मैं इसको same force से hit कर रहा हूं, this fat book is not moving that much. It's moving only a little bit. ये 1 इंच हिला भी नहीं है, बस यहां से इतना हुआ है. Whereas when I kept the Philosopher's Stone, ये पतला वाला बुक जब मैंने रखा था, it went यहां से इतना ज्यादा. Okay, it went काफी आगे चला है. Now, if you look at the surface size में कोई difference नहीं है. इनका जो कांटेक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स,
तो इनका जो बॉटम कॉन्टैक्ट में आ रहा है दैट इज ऑफ द सेम साइज. व्हाट इज द डिफरेंस हियर? द डिफरेंस इज इन द वेट. इसका वेट, ये जो है ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, इसका वेट ज्यादा है, जबकि जो फिलोसोफर्स स्टोन है, जो पतला वाला बुक है, उसका वेट कम है. इससे हमको क्या पता चला? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो अफेक्ट्स फ्रिक्शन. कीप इन माइंड दैट द मास डज नॉट अफेक्ट, द वेट अफेक्ट्स, बिकॉज वेट, ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन. तो हाउ डज द वेट अफेक्ट? उसके लिए देखेंगे कि ग्रेविटी इज पुलिंग द बॉक्स डाउन. ओके, सो फ्रिक्शन, मैंने जैसा बोला कि दो सर्फेसेस का इरेगुलरिटीज है, तो हाउ हार्ड यू प्रेस देम टुगेदर, यानी आप कितना उसके ऊपर दबाओगे उसको साथ में, यू प्रेस देम टुगेदर, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा. एंड व्हेन द वेट इज मोर, इट इज ऑटोमेटिकली प्रेसिंग इट डाउन अ बिट मोर. अभी आप देखो लेफ्ट पे ये बुक का वेट कम है, दिस बुक, तो इसके ऊपर जो फोर्स विच इज पुशिंग इट डाउन, विच इज पुशिंग देम टुगेदर, कीपिंग देम टुगेदर, इज लेस. वेयर एज दिस बुक, द सेकेंड बुक, इसका वेट ज्यादा है, so the force which is pushing it down is also more, hence the friction between them is also more. तो हमने क्या देखा? There are two things which affect gravity. First one is the nature of the surface, smoothness या roughness of the surface affects friction. Second one is the weight of the object. Weight of the object also affects friction. ये clear है? Are these two concepts clear? Nakit Shukla is asking what is the difference between weight and mass. See, the difference basically is mass is the mass of the object. Mass is a quantity, whereas weight is the mass which is being pulled down due to gravity. ठीक है? Mass property होता है एक ऑब्जेक्ट का. Weight is mass into gravity, acceleration due to gravity. तो इसका मास जितना भी होगा, the weight of this book would be different on earth, it will be different on moon, but mass would always be equal. ठीक है? So that being said, we'll move on to the next thing, that is there are two types of frictions, that is static friction and sliding friction. Let me show about this again. Yeah, so now what is the difference between these two? Again, I will show this, I will demonstrate that by an experiment. Let's take these books. These are my favorite books, by the way. I am a huge fan of Harry Potter books and the movies as well. I am a Potter head almost, but not really. So what I am going to do is, I have this lock again, and this time I am going to put this rubber band and I will put it through a thread. I have a jute thread over here, so that it's easier for me to pull. ये मैंने ऐसे रख दिया. So this is how I'm going to pull it. Now what I'm going to do is, I will keep this here, the rough surface, and I'm just going to pull it. So now see, when I'm pulling it, the rubber band is getting stretched. काफी stretch हुआ, right? But once it starts moving, it's pulling. But once it starts moving, it's easier for me. Like starting में I have to put in a lot of effort just to make it move. But once it starts moving, it's easier for me to pull. Is it not true? ऐसा है. I'm pulling it. I have to pull it a lot. Oh, अभी ये थोड़ा बाहर जा रहा है. I have to pull it a lot. Then afterwards, it becomes easier for me to pull. Which means that when an object is at rest, the friction is more. When an object is static, जब एक object रुका हुआ है या rest पे है, उसको friction ज्यादा होता है. But when we start pulling it एक time, then the friction reduces it a bit. आप इसको ऐसे सोचो. मैंने बोला irregular surfaces है. It's like this, right? मैं ऐसे बता रहा हूँ. तो ये अभी रेस्ट पे है, तो ये अटका हुआ है. You have to pull it अच्छे से. Then it starts moving. But once it starts moving, they don't get enough time. ये जो irregularities है ना, इनको interlock होने के लिए उतना time नहीं मिलता. So they just interlock little bit. तो इससे हमें one thing which we learn is static friction is greater than sliding friction. यानी static friction जब object रुका हुआ होता है, उसका friction
ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी कभी आपने किसी कार को धक्का दिया है, किसी का गाड़ी खराब हो गया, तो when you start pushing the car, it is difficult to push it, but once it starts moving, you can easily push it. या बॉक्स रखा हुआ है जमीन पे, there is a box kept which you are pushing, या अलमीरा आप घर में ढकेल रहे हैं, तो in the beginning it's very difficult to push, but once it starts moving, when the almirah or the box gets in motion, it's easier to continue the motion. Understood? ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया ना? प्रणय ने बोला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट ये इनर्शिया नहीं है, इनर्शिया इज डिफरेंट, फ्रिक्शन इज अ बिट डिफरेंट, बट दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस। नाउ अभी बोलोगे आपके यार ये फ्रिक्शन नहीं होता तो लाइक वजन चीज उठाना कितना आसान होता, राइट? मुझे अलमीरा ये रूम से उस रूम में रखता है, आई विल जस्ट इजीली पुश इट, आराम से उठाता, मैं यहां से वहां रख देता, वहां से यहां पे रख देता, लाइफ वुड हैव बीन सो मच सिंपलर। यस? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम फ्रिक्शन को समझ रहे हैं कि इट्स स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग वर्क, बट फ्रिक्शन इन इटसेल्फ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, मुझे थोड़ा प्यास लगी, सो आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। कूल? नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू होल्ड दिस वाटर। मैं ऐसे पकड़ता, वो स्लिप हो जाता, आई वुड हैव हेल्ड इट लाइक दिस, वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? बिकॉज द बॉटल का सर्फेस इज रफ। हाउ डू यू नो द बॉटल का सर्फेस इज रफ? यू नो इट बिकॉज आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। ये देखिए अभी आप, the surface of the bottle is rough, right? It's not smooth, it's a rough bottle. So when I hold it, it does not slip. Friction is stopping it from moving towards the earth and it is staying in my hand. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आई वुड हैव जस्ट ऐसा, मेरा हाथ स्लिप होकर ऊपर आता, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू लिफ्ट द बॉटल अप। तो जब हम लिफ्ट कर रहे हैं, when we are holding things, when we are writing, देखो हम राइट कर रहे हैं, दैट आल्सो पेन पेपर पे हम घिस के लिख रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन। लाइक पेन में जो ग्रेफाइट होता है ना पेंसिल में, फॉर एग्जाम्पल, those small bits get stuck in the paper because of friction. जो irregularities पेपर में होती है, that's where the ink goes and gets stuck. Yeah, that's where the graphite from the pencil goes and gets stuck. तो ये सारी चीजें happens because of friction. Walking हम कर रहे हैं, we can walk because of friction, वरना हम slip होकर गिर जाते हैं यार। When we are talking, we are moving the tongue in our mouth. Imagine हमारा टंग अगर स्लिप हुआ था, ऐसे बात ही नहीं कर सकते। मैं कुछ बोल रहा होता, मेरा टंग स्लिप हो जाता, राइट? So that is what friction does. So friction is not a bad thing always. Friction has a lot of uses as well. For example, if you want to light a match, imagine I have to light a matchstick. See, I have a matchstick over here. अगर ये स्लिप हो जाता तो would I have been able to, slide? देखो यहाँ पे स्लिप हो रहा है, I can't light it up. I'll keep it and it just slips. But because the surface is rough, I can do this and it lights up. समझ रहे हो आप? So friction does a lot of good things and it has a lot of bad effects as well. And we as humans, we see where to make use out of that. So what are the bad things which friction does? Friction क्या करता है पता है? Just do this thing. अपना हाथ लो and start rubbing your hands. Do like this. Everyone सब ऐसे करो, ऐसे. Just do this. Do it for 2-3 seconds, everyone. ऐसा rub your hands together. There is friction, right? जब आप when you are rubbing your hands are rubbed. They are not very smooth. You have this finger prints kind of things all over your hand. So what happens? आपका हाथ गर्म हो रहा है क्या? Just tell me. Can you see what is happening? Your hands are heating up. आपका हाथ गर्म हो रहा है, which means friction produces heat. Yes, it became hot. आपका सबका hot हो गया है. श्वेता का हाथ भी गर्म हो गया है. प्रणव का हाथ भी गर्म हो गया है. Naisa is asking, how are you, sir? I am very nice. I am very fine. I hope people are good also. आप लोग कैसे हैं? तो फ्रिक्शन से हमें क्या पता चला कि हाथ गर्म होता है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट.
सिमिलरली आपने कभी पुरानी गाड़ी का टायर देखा है क्या, या आपके अपने पुराने जो स्लीपर्स होते हैं उनको देखा है? ओके, मैंने यहाँ पे स्लीपर लाना भूल गया अभी, तो आई कांट शो इट टू यू, बट व्हाट हैपेंस इज इट स्टार्ट्स वेयर एंड टेयर, यानी वो खराब होना शुरू हो जाता है। अगर आपने कभी ओल्ड टायर्स देखे होंगे ना, तो देखो इस पे घसा हुआ मार्क्स है सारा, लेकिन ये चल चल के इट हैज स्टार्टेड वेयरिंग आउट, यानी वो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट्स निकलना स्टार्ट हो गया है। दैट इज कॉल्ड वेयर एंड टेयर। इससे क्या होता है, मटेरियल्स वेस्ट हो सकते हैं, या आपकी फैक्ट्री में मशीनरी है तो वो थोड़े दिन बाद कांट यूज इट बिकॉज वो अभी खराब हो गया। तो फ्रिक्शन के दो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड इट कॉजेस वेयर एंड टेयर। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास नाउ। इसके बाद में आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मेंटी क्विज। सो बताओ मुझे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। Tanishka is asking me to start Menti. I am not going to start Menti before ending this. मैं chapter complete करके Menti करूंगा, so you have to stay around and pay attention because the examples which I am giving you right now, I'll be asking the same things in the Menti quiz. तो क्रिस्टल के सबको हो गया और सनशाइन एंटरप्राइज को विनोद हो गया है। वी ऑल लव विनोद यार। विनोद कमेंट्स में विनोद कितना मजा आया था ना, बहुत ज्यादा मीम्स भी बने थे। मैंने भी बहुत जगह पे है ना ऐसे देखा, लाइक कमेंट्स कहीं भी खोल रहा हूँ विनोद लिखा हुआ है। मुझे तो स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है, बट ठीक है, अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया। मेरा कमेंट सेक्शन विनोद नहीं, मेरा कमेंट सेक्शन शुड ऑलवेज बी क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहाँ पे आई एम हियर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू यू। अगर आपको डाउट भी आया तो यू आस्क मी एंड आई विल मेक इट क्रिस्टल क्लियर। कूल, तो ये समझ आ गया। अभी हम देखते हैं कि हाउ कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज फ्रिक्शन। मैंने बोला कि ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट। अभी हम फ्रिक्शन को देख के ये नहीं बोलेंगे कि फ्रिक्शन इज बैड और फ्रिक्शन इज गुड। वी विल सी कि सिचुएशन क्या है एंड शुड वी इंक्रीज द फ्रिक्शन और शुड वी डिक्रीज द फ्रिक्शन। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल वेयर यू वुड वांट टू डिक्रीज फ्रिक्शन? कोई एग्जांपल दे सकता? इंक्रीजिंग फ्रिक्शन का तो मैंने बता दिया क्या ना, देखो बॉटल स्लिप हो रहा था तो व्हाट वी डिड, वी मेड द सरफेस रफ। तो अभी इसका फ्रिक्शन बढ़ गया एंड आई कैन होल्ड इट, इट्स नॉट गोइंग टू स्लिप फ्रॉम माय हैंड्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई कांच का चीज लेके जा रहे हो एंड इट स्लिप्स, हाथ से टूट जाता है गिर के, और यू आर वॉकिंग ऑन स्टेयर्स, बारिश हुआ होगा मे बी, एंड द स्टेयर्स आर स्लिपरी बिकॉज पानी है वहां पे, एंड यू स्लिप एंड फॉल डाउन। सो व्हाट डू वी डू, वी पुट कारपेट ऑन द स्टेयर्स सो दैट वी डोंट स्लिप। वहां पे वी इंक्रीज फ्रिक्शन। नाउ गिव मी एग्जांपल्स ऑफ वेयर यू डिक्रीज फ्रिक्शन। Someone said ball bearing. Ball bearing, yeah, that is true. But अपना लाइफ से एग्जांपल दो ना। बॉल बेयरिंग तो डेली आप खुद यूज नहीं करते। Avenger girl is asking me to repeat. Which concept do you want me to repeat? Tennis racket grip. Yes, that is a good example. हाँ, डिक्रीजिंग में वी हैव कैरम बोर्ड। आप लोगों ने कैरम बोर्ड कितने लोगों ने खेला है? तो वी हैव द स्ट्राइकर, उसको ऐसे करके वी स्ट्राइक, राइट, उसको ऐसे मारते हैं। सी, दिस इज द स्ट्राइकर। व्हाट हैपेंस इज द स्ट्राइकर इज आल्सो अ बिट इरेगुलर surface, and not just the striker but the carom board itself is also irregular. So let me just draw how it looks when you look it in the microscope. For example, this is the carom board, okay? माइक्रोस्कोप में ऐसा नजर आएगा आपको। एंड स्ट्राइकर को कौन सा कलर दूं? शुड आई यूज ब्लू कलर? यस, आई एम गोइंग टू यूज ब्लू कलर। तो दिस इज द सरफेस ऑफ द स्ट्राइकर, ठीक है। अभी क्या होगा, ये दोनों में इरेगुलरिटीज इंटरलॉक होना स्टार्ट होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड इट विल कॉज फ्रिक्शन। आप शॉट लगाओगे बीच में, ऐसा होता है ना, यूज ऐसे स्ट्राइकर को आप ऐसा स्ट्राइक करोगे, वो आधा कैरम बोर्ड पे जाके रुक जाता है। व्हाट डू यू डू एट दैट टाइम? आप क्या करते हो? पाउडर डालते हो बोर्ड के ऊपर। अब ये पाउडर फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे करता है भाई? सो लेट मी शो यू हाउ द पाउडर डज दैट। तो आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर टू रिप्रेजेंट पाउडर। व्हाट हैपेंस इज, ये जो पाउडर है ना, इट विल गो एंड फिल दिस इरेगुलरिटीज। ऐसे ही फिल कर देगा इनको, ठीक है। यहां पे भी ये ऊपर भी आके अटक जाएगा। सो इट इज गोइंग टू फिल ऑल दिस इरेगुलरिटीज ऐसे। तो दिस सर्फेस विल बिकम स्मूथर। रफ था, अभी स्मूथ बन जाएगा। पाउडर इज वेरी फाइन, वेरी थिन पार्टिकल्स आर देयर, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स।
तो ये जाके सारा irregularities में अटक जाएंगे, and what happens is when it fills, it becomes a smooth surface and now the friction is reduced. Is that cool? सबको समझ आया? Yes, सबको समझ आ गया. Niyasa is asking, please guys don't spam. Hi, spam mat karo. I have to scroll 2-3 times to see what comments you are saying because you will type the same thing 10 times. I can read it if you type it once as well. So what is the powder doing here? The powder is reducing the friction. Similarly, when we have machines, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे gears दिख रहे हैं, बड़े-बड़े gears हैं. What happens is friction की वजह से there is a lot of wear and tear. Okay, मैंने कहा friction causes two things, wear and tear and heat. Wear and tear हो रहा है, heat हो रहा है. अब मशीन गर्म हो जाएगी भाई तो अच्छा थोड़ी रहेगा. It is going to cause more problems, overheat हो जाएगा. And wear and tear से अगर खराब हो गया तो फिर काम ही करना बंद हो जाएगा. So again, what do? We reduce friction. And how do we do that? We put oil. आपने ये देखा होगा ना, यहाँ पे जो रेड कलर का ये है, you might have seen this many times in your life. आप मैकेनिक के शॉप पे जाओगे तो वहां पे आपको नजर आएगा. हो सकता है आपके घर में भी होगा ये. कभी आपके घर में मोटर या पंप खराब हो गया तो उसका रिपेयर करने वाला आता है, उसके पास ही होता है. What do? Is they put the oil. So what happens is, you see these two gears of a machine, they are rough surfaces, right? ये rough surface है काफी. इसमें ऐसे थ्रेड्स बने हुए हैं. ये दो सर्फेसेस ऐसे 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 घूम रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन आता है. तो व्हाट यू डू, यू पुट ऑयल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लुब्रिकेंट्स. जब आप डालते हो तो इट फिल्स इन दोस स्मॉल इरेगुलरिटीज व्हिच आर देयर एंड इट मेक्स इट स्मूथ एंड द फ्रिक्शन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. इससे वेयर एंड टेयर भी कम होगा और हीट भी कम प्रोड्यूस होगी. नाउ आर यू क्लियर विद दिस इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट? Are you fine with this? ये सब समझ में आ गया? Go and type crystal clear if you are clear with this. Avenger girl is asking me to explain again, but she is not telling me what should I explain again. So I am a bit confused. थोड़ा friction ज़्यादा हो गया यहाँ पे. Now let us look at another interesting thing. That is wheels. Now I'm going to show this using an experiment again because you know that I love doing experiments. By now you know. So let us see. I have two cells. ठीक है? I have two cells over here. मैंने इसको ऐसे रख दिया. Now what am I going to do is I have another book. This again is a Harry Potter book. ये हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड है. बहुत ही बेकार बुक है यार. मेरे मुझसे रिव्यू मांगोगे ना, आई डिड नॉट लाइक दिस बुक एट ऑल. आई लाइक द फ्यू कॉन्सेप्ट बट बुक थोड़ा ठीक है. लेट्स नॉट डू बुक रिव्यूज इन द फिजिक्स क्लास. सो यू कैन सी. अच्छा पहले ये हटाता हूं. व्हाट हैपेंस इफ आई ट्राई टू पुश दिस? आई एम जस्ट पुशिंग द बुक ऐसे एंड द फ्रिक्शन इज सो मच बिटवीन द बुक एंड दिस सरफेस दैट ये जो पैड है दैट इज ऑल्सो मूविंग, राइट? सी, I'm just touching it barely and I'm pushing it. I'm not using a lot of force. But it is moving along with the pad. That is not good. I don't want that. इसका मतलब ये है कि if the ground was fixed, right? अगर ये fixed होता, for example, if I hold the pad with my hand like this, ये book को push करने में बहुत energy waste होती है. So how can I make it efficient? What I'm going to do is, I'm just going to take two cells. These are cylindrical surfaces, right? And I'm going to keep the book on top of it. I'll show this Harry Potter side to you. Now, when I push it, you see how easily is it moving? And the cells are rolling. Can you see the cell rolling? I'll put a mark on it so that you can see it that it's rolling. How do I put a mark now? I have a tape. I'll just use the tape and put a mark. I'm cutting a small piece of tape and I'm going to stick them on the cell. See, यहाँ पे मैंने एक लगा दिया ऐसे. Similarly, I'm going to put one more over here. So now if it rolls, you can see that it is rolling easily.
I'm going to keep the book on top of it so that it's more visible. ये मैंने book रखा है. When I roll, you see that these cells, the cylindrical cells, are also rolling, and that is significantly reducing the friction. यानी पहले जब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा धक्का दे रहा था, it was not moving, but अभी मैं देखो, I'm using the same force. Look how easily it is moving. I do this, and it automatically moves. I have to hold it to stop. Are you seeing? Now ये जो roll हो रहा है ना, see, I just did this, and it went off on that side. Do you see how simple and easy that is now? Let me show you how much friction is there in sliding. I'm just sliding. Abhi rough surface bhi nahi. This is a smooth surface, and I'm pushing it. It stops whenever I stop. Which friction is this? This is, first of all, here the static friction hai. If I just keep on doing this, this is sliding friction hai na? Because sliding friction में I still have to keep on pushing it. But जब हम rolling friction देखते हैं, see, I kept these two cells यहाँ पे रखा है, and just let me push it once. Wow, it went off. Do you want me to push this book off the table? ऐसे अगर मैं थोड़ा और force आऊंगा, it will go off the table, man. Do you see how fast it is moving and how conveniently and easily it is moving? That is because wheels reduce friction. Okay? Wheels reduce friction. Wheels significantly friction को कम करते हैं. So when you roll one body, okay, when one body rolls over another surface of another body, ठीक है, the resistance of the motion, अभी जो motion oppose कर रहा है ना, इसको हम rolling friction बोलते हैं. मैंने बोला था कि जब बॉडी स्टेशनरी है, स्टैटिक है, जब जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. जब बॉडी स्लाइड हो रहा है, व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग लाइक दिस, व्हेन अ बॉडी इज स्लाइडिंग लाइक दिस, ऐसा जब स्लाइड हो रहा है, दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. एंड व्हेन अ बॉडी इज रोलिंग, रोल कैसे होता है? बॉडी इज रोलिंग लाइक दिस, this is called rolling friction. Very easy to remember. Remember the definition of rolling friction. ये वाला important है, दूसरा वाला friction तो आपको बहुत आसानी से समझ आ गया. तो rolling friction सबसे ज्यादा आसान है. तो let us see which one is more, ज्यादा stronger. तो static friction में सबसे ज्यादा friction होता है, ये first number पे है. Sliding friction comes second, and rolling friction has the least amount of friction. So wherever we can reduce, we want to reduce friction, what do? We introduce rolling friction over there, and for that we use ball bearings. For example, instead of sliding the bus, यानी बस को अगर हम ऐसे, bus is like a box, right? अगर सिर्फ उसको ढकेलेंगे, it's going to take a lot of friction. So what do? We add wheels to it. Wheels क्या है? Wheels की वजह से वहां पे rolling friction आता है, and now we can easily move. Same goes for ball bearings. अगर आपको है ना कहीं पे फ्रिक्शन कम करना है, मशीन्स एंड ऑल, व्हाट डू वी यूज अ बॉल बेयरिंग. आपका फिजिट स्पिनर है, राइट? दिस फिजिट स्पिनर, यहाँ पे जो बीच में जो मूव होता है ना, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ बॉल बेयरिंग विच इज देयर हियर. डू यू अंडरस्टैंड हाउ अ फिजिट स्पिनर वर्क्स नाउ? फिजिट स्पिनर हैज रोलिंग फ्रिक्शन, एंड दैट is there in the ball bearing which is there inside this. Understood? How many of you have a fidget spinner, by the way? Like, I think a couple of years back fidget spinner was like the craze. Everyone had a fidget spinner at that time. मेरा भी उतना पुराना है. Now I think it got a bit of rust as well. Yes, cool. So now we see that static friction सबसे ज्यादा फ्रिक्शन देता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम देता है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा फ्रिक्शन देता है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ये लास्ट टॉपिक है. इसके बाद में वी आर गोइंग टू हैव द मेंटी क्विज. सो yesterday we saw that just like how pressure is there in solids, pressure is also there in fluids. Fluids क्या होता है? What are fluids? Just tell me what are fluids. Comments में मुझे बताओ fluids क्या होते हैं. I want to see if you people remember what fluids are.
Do you people remember what are fluids? रजानी ने बोला liquids. Fluids का part होता है liquids, but fluids have more than liquids also. Yes, liquids and gases. Nayasa Chandel ने बोला liquids and gases together are known as fluids. And why is that so? Because the properties of liquids and gases are similar when compared to solids. So frictional force होता है क्या fluids में? यानी पानी में frictional force होता है क्या? एयर में फ्रिक्शनल फोर्स होता है क्या? टेल मी. कभी आप बाइक पे जब स्पीड अगर जा रहे हो, आपका फेस पे हिट करता है कि नहीं करता एयर, राइट? या अभी कभी आप स्विमिंग पूल में डाइव किए हो, व्हेन यू डाइव इन अ स्विमिंग पूल यू फील दैट द वाटर इज पुशिंग यू अवे, है क्या नहीं? नाउ दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. व्हेन यू मूव इन वाटर यू हैव टू एक्सर्ट फोर्स. दैट इज बिकॉज वाटर इटसेल्फ इज trying to stop you from moving in that particular direction because of friction. और जब पानी में या हवा में या कोई भी लिक्विड या गैस में फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? We call it drag. So solids में we have friction, fluids में friction को हम बोलेंगे drag. Drag is nothing but friction. It's just friction in liquids and gases. Understood? समझ आया ना what is drag? Frictional force exerted by fluids is called drag. Now what are fluids? Fluids are gases and liquids. ठीक है? और हमने देखा कि है ना what affects liquid friction in solids? The weight of the object affects the friction, and secondly the surface, the nature of the surface affects friction in solids. Fluids में it's a little bit different. Fluids में there is one more factor, and this is it is affected by the shape of the object. That अभी आप बोलोगे शेप से भला कैसे अफेक्ट होगा यार? शेप से क्यों अफेक्ट होगा बोलो? शेप से अफेक्ट होगा बिकॉज आपने अभी रॉकेट बनाई है, पेपर प्लेन बनाया है, which you throw like this. When you make a paper plane, it is always in the shape of like this shape, right? पेपर प्लेन आप जब बनाते हो तो इट्स समथिंग लाइक दिस, है ना? इट्स ऑलवेज इन अ ट्रायंगल. यस और नो? आपका काइट भी देखो, काइट इज ऑलवेज लाइक दिस, ट्रायंगुलर. सामने से द फ्रंट इज ट्रायंगुलर. व्हाई इज दैट सो? दैट इज बिकॉज you do not want friction to come and stop you. So what happens is जब हवा यहां से है the air will deflect. यहां से जो हवा आ रही है it will just go in this way. यहां से जो हवा आ रही है it will move. यहां से जो हवा आ रही है it will move. यहां से जो हवा आ रही है it will go in this direction. और आप हवा के बीच में से ऐसा रास्ता बना के आगे जाते हो. That is why the rocket which you make, the paper plane which you make is triangular in shape. देखो यहाँ पे है. So that the air goes in the sides and the friction is reduced. Understand? अगर आप birds को देखोगे तो birds are also in a similar shape, right? Birds का भी wing ऐसे होता है और front में उनका, see this is how a bird looks ना. This is how planes are there and that is how birds are there. Yes or no? Plane को देखो आप, सामने से pointed है. Even if you look at cars, cars are a little bit pointed. देखो ये जो green lines है ना, these green lines show air का drag. Do you understand how drag is working now? समझ आया क्या? So this is how the shape affects the drag in water and air, liquids and gases. That is why fishes are also in triangular in shape. सामने से अगर आप देखोगे तो fish is like this, right? Fish ऐसे ऐसे जाती है ना, सामने से ऐसे होता है, like it swims like this. So this shape is called streamlined shape. Okay, this shape is called streamlined. Streamlined. So the streamlined shapes have least amount of friction, less friction. When a body is streamlined, it has less drag due to the fluids. That
That is why cars are सामने से पतले होते हैं, पीछे से बड़े होते हैं. Planes are also pointed. Fishes are also, a bit pointy from the front. Same goes for bird का जो beak होता है, it's very sharp from the front. That is the reason. So I hope you got all these things. हमारा आज का टॉपिक में ये सारा कवर हो गया. Now we'll move on to the Menti quiz. Nayasa is saying streamlining reduces the drag, enabling the objects to pass through easily. That is absolutely correct. Streamlining से drag कम होता है. What is drag? Drag is friction. यानी friction कम होता है. So what did we learn today? We learned that friction is the force, opposing force, where there are two surfaces in contact, and उनका relative motion को ये force oppose करता है. ठीक है? Second thing, what did we learn? Friction is because of the nature of the surface rough होगा या smooth होगा, that affects friction. Weight of the object also affects friction. अगर weight ज्यादा है तो friction ज्यादा होगा, weight कम है तो friction भी कम होगा. उसके बाद हमने देखा कि there are three types of frictions. There is static friction, there is sliding friction, and then there is rolling friction. और इनको हमने देखा कि कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है. Then we had a look at wheels, how do wheels introduce rolling friction and how do they help, and in the very end we had a look at fluids में friction कैसे होता है, the friction which is there in fluids, and it is called drag. Apart from these, we also had a look at lubricants. Lubricants reduce friction. Examples of lubricants is oil, talcum powder. These are all lubricants and we use them. So should I move on to the Menti quiz right now? Should I start the Menti quiz? So cool. I will give you the code now. Let me enable the quiz. Yes, can you see the Menti quiz now? It is right on the screen. Just go to menti.com and use the code 2354602. 2354602 आप वहां पे menti.com पे जाके डालिएगा और वहां पे I will let you in and we will have a live quiz right now. Okay, I'm waiting for you. जल्दी आ जाओ. ठीक है. So I'm starting the quiz now. आप लोगों के पास आ गया है. The code is 2354602. I think मेरा स्क्रीन पे से Menti quiz चला गया. I'll just bring it back again. Yes, you can see. Okay, there are 12 people there. Should I let you in? See, there are 28 people who are live in the video right now. I want you people, all of you, to join the Menti quiz because this is going to be fun. So अभी तक 18 लोग आए हैं. I will start letting you in. See, I already have 24, 25 people. Nice. Let's wait for the two more people who are there. Cool. So all 28 of you are here now. Should I start the quiz या कोई और भी आने वाला है? I think I should start the quiz now. You are all here. So let us start. So you have to answer faster to get more points. Okay. First question is, the friction opposes the dash between the surfaces in contact with each other. What does friction oppose? It opposes rest, it opposes motion, or does it oppose roughness? I have given you ample amount of time, and whoever answers first gets more points. Remember that. So try to answer early. 3, 2, 1, and time's up. Let's see what did you people answer.
So 25 of you give the correct answer, which is motion. Friction opposes the motion between the surfaces in contact with each other. Cool. Friction क्या oppose करता है? Friction opposes the motion. Friction roughness को oppose नहीं करता है. Roughness की वजह से friction आता है. Roughness causes friction. Cool. Let's see the leaderboard now. Nice. Okay, so Sahil Datta is on top today. Second is Inam Bolo Tararara. Nice name. यार अपना असली नाम रखो so that I can call you. And third came Tanya. Fourth is Tanvi. So let's see how do you all do. And all of you have scored nicely. Like everyone, all of you give correct answers. 25 of you gave correct answers. So let's move on to the next question. So again, you have to answer faster. Sprinkling of powder on the carom board क्या करता है फ्रिक्शन को ये? Does it increase the friction? Does it reduce the friction or does it make it shiny? This is easy. मैंने आपको 15 seconds दिए. Just attempt the question once. 5, 4, 3, 2, 1 and time's up. 10 of you said increases friction. नहीं भाई, increase नहीं करता है. I showed it to you, right? कि ऐसा जब irregularities होती है तो powder goes and sits in the irregularities and the surface becomes smoother. So what happens is the friction is reduced. ठीक है ना? Makes it shiny. नहीं यार, हम shiny करने के लिए, हम shiny गेम नहीं खेल रहे, हम friction खेल रहे हैं आज. ठीक है? And there are 39 people. I think some of you did not attend my class because there were 28 people in my class and 27 of them gave me the correct answer. So my students, everyone had crystal clear topic. So you people also attend this lecture after this class ends and you will be able to answer these all correctly. So next question. उससे पहले leaderboard. So again Sahil Dalal is on top. Second came Tanya and Tanvi jumped from the 4th place and now is on the top. Wow. So let us see. Tanya on the top and Menti Plus is on second. See, if you don't keep your actual names, I can't take your names. It becomes inconvenient for me. Third is Nyasa Chandel. Nyasa Chandel ko सारा concept crystal clear था. So very nice. She also did it nice. And Shirey is number 4. Let's move on to the next question. So I have given you a few options. You have to choose in the decreasing option of friction. याद रखिए आपको decreasing option में देखना है कि किसमें friction जो ज्यादा होता है वो पहले आएगा, फिर उससे कम कौन सा था वो आएगा, and जो सबसे कम है in the end that is going to come. Cool? So let's see. I have given you time. थोड़ा सोच के आप इसका आंसर करो मुझे. Just see. You have to choose in decreasing order. Decreasing order means पहले वो फोर्स आएगा which is high, उसके बाद में उससे कम वाला आएगा और finally the force which is least will come. And the options are like rolling friction, static friction और sliding friction. इसका मैंने combinations बना के दिया है आपको. So you find out which one is in the decreasing order of friction and select that option. So time run out हो रहा है. Yeah, I have discussed this in class. मैंने 2-3 मर्तबा ये आपको स्लाइड दिखाया था. 3, 2, 1 and yes, time's up. 19 people have given the correct option. See, you people made the same mistake. मैंने बोला था decreasing order. 15 people gave me in the increasing order. तो that is not correct. आपको क्वेश्चन इसीलिए पढ़ना is very important to read the question, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते तो आपको पता चलता है कि मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है. You people chose the increasing order. So the decreasing order is static friction में सबसे ज्यादा होता है. Second comes sliding friction and finally there is rolling friction. Cool? Let's look at the leaderboard now. Nice. So
तानिया आपने आंसर गलत दिया यार आपकी बार। और टॉप पे अभी आ गए हमारे पास मेंटी प्लस, प्लीज चेंज योर नेम। सेकंड केम श्रेय एंड थर्ड इज नयासा चंडल अगेन। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है गुनगुन लकी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We are coming towards the end of the quiz now and try to answer fast because it will give you more points. This time you have to choose in the increasing order of friction, okay? Last time जैसा बोला था उसका opposite, अभी increasing order में आपको बताना है, okay? ये surfaces के बारे में है, these are surfaces, और इनका friction किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है मुझे बताइएगा। Remember again, you have to choose in increasing order of friction. Decreasing order में आपको नहीं करना है। Decreasing order में आपको last question में था। तो increasing order means सबसे कम friction कौन सा है वो पहले आएगा, उसके बाद आएगा उससे बढ़ के, उसके बाद आएगा उससे बढ़कर, और फाइनली जिसमें सबसे ज्यादा friction होता है जो मटेरियल में, that will come in the end. Understood? Cool. So time is running. जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। लेट्स सी। यस, सो दिस टाइम 15 पीपल गिव द करेक्ट आंसर और द करेक्ट आंसर वाज, देखो मार्बल, वेट मार्बल में फ्रिक्शन सबसे कम होता है बिकॉज यू स्लिप। अगर आप मार्बल पे चल रहे हो यू स्लिप राइट, वेट मार्बल पे। उसके बाद में ड्राई मार्बल में उससे ज्यादा फ्रिक्शन होता है। देन कम्स न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में थोड़ा और फ्रिक्शन होता है बिकॉज इट्स रफ सरफेस पेपर है। एंड फाइनली कम्स अ टॉवल। टॉवल इज वेरी थिक क्लॉथ का बना है, उसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा। कूल, लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। नाइस, गुनगुन लकी ने सबसे जल्दी आंसर दिया था आपकी बार। एंड तानिया इज बैक इन द गेम, शी इज फर्स्ट राइट नाउ। सेकंड इज गुनगुन लकी, थर्ड इज श्रेय। उसके बाद में आशुतोष शेखर जम्प्ड अप द प्लेस एंड केम ऑन फोर्थ प्लेस। एंड देन वी हैव साहिल। यार मेंटी प्लस को नयासा चंडल को क्या हो गया? यू पीपल वर डूइंग वेल लास्ट टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं। फाइनल क्वेश्चन नाउ, लेट अस सी हाउ डू यू पीपल डू। Friction produces what? What does friction produce? Heat, light, or smoothness? Let us see. Hands up. Some people said smoothness, some people said heat, some people said light. Oh, there's a slight, okay. Heat was the correct answer actually. I think I forgot to, put the tick over here. So I will see if I can give you marks. But this was the last question for today. So अगर किसी को नहीं आया तो there is no game here. So today's leaderboard में हमारे पास टॉप पे है तानिया, second came गुनगुन लकी and श्रेय. So let's see. Final question. Which substance will reduce friction? जो substance reduce करता है friction उसको हम क्या बुलाते हैं? This is a fill in the blanks. You have to type it fast. मैंने क्लास में बोला था आपको और उसका examples भी दिया था. Examples included oil and powder, talcum powder. So what is that called? What is the term used for the substances which reduce friction? You have to type the answer in. Three, two, one. Time's up. आप लोगों ने आंसर दिया है कितना ज्यादा यार, कुछ कुछ दे दिया है। द करेक्ट आंसर इज लुब्रिकेंट्स। बॉल बेरिंग बोला नहीं, लुब्रिकेंट इज करेक्ट, लुब्रिकेंट्स इज करेक्ट। मैंने आई डिड नॉट आस्क व्हाट सब्सटेंसेस रिड्यूस फ्रिक्शन। सी, ऑयल रिड्यूसेस फ्रिक्शन, बॉल बेरिंग रिड्यूसेस, पाउडर रिड्यूसेस, these objects reduce friction, but what are they called? इसको हम क्या बोलते हैं? We call them lubricants. Okay, इनको lubricants बोलते हैं। So let's have a look at the leaderboard. Let's see who gave the correct answers. So Shrey, Astha, Tanvi, Vanshi, Avinash. Oh, Avinash is also a fan of Dhoni sir. Nice. But Avinash, just write your normal name. Okay.
So today's winner is Shrey and he got 4,772 points. Congratulations, Shrey. Apart from that, second game, like we have on our top leaderboard, we have Astha, we have Avinash, we have Tanya, we have Vanshika Gupta, we have Gungun Lucky, we have Ashutosh Shekhar, we have Sahil Dalal, and we have a cartoon character called Kik Patowski. And in the end, we have finally Tanvi. So that's all today. Congratulations, Shrey. You did a great job. आपको सारा concepts crystal clear है. All the people who came on the top, crystal clear answers थे उनके. So I hope you people did well. आपको सारा समझ आ गया होगा अभी तक. अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आया है, तो please let me know. अगर आपको कोई भी concept clear नहीं है, तो put it in the comments. I will explain it to you and keep attending my class. Ask your friends. Subscribe to the channel. And apart from this, Unacademy has created another channel because अभी आप लोग घर पे हो, probably playing a lot of indoor games. So we have a channel dedicated at teaching you how to play chess. We have grandmasters, we have people who are like pro gamers in the domain of chess. Pro gamer बोलते हैं, people think about PUBG or Fortnite. No, not those gamers. These are chess masters, grandmasters of chess, and they are going to teach you how to play chess. So go ahead and like and subscribe that channel as well. उसका link भी probably description में होगा आपका. So that's all for today. I hope you liked the video. I hope you understood the concepts and everything is crystal clear. So that's all for today, people. Bye bye. Hope you have a nice day. Bye bye.